अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू verse number 126 we are looking at the dua of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Yeah, Yeah. so Hazrat Ibrahim alayhi salam made this dua and it starts like this. um أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. So he said, and when said Ibrahim, my Lord, Rabbi, make this a city secure, make it a secure city. And what else? And provide its people, ahluhu, with fruits. And there is a specific category he mentioned. He said, whoever believed from them in Allah and the day and the last day. Right? Remember a few ayahs back, Allah subhanahu wa ta'ala says, Qala la yanalu ahadid zalimin, meaning those people who are going to be the wrongdoers. In other words, the non-believers, right? So Hazrat Ibrahim alayhi salam, when he made the dua, he was making sure that he include only those people who would be believing in him and the last day. So Allah subhanahu wa ta'ala in return says, Qala wa man kafara fa ummatti'uhu qalilan summa turruhu summa attarruhu ila adhabin nar. That and whoever disbelieved, then I will grant him enjoyment a little. Meaning that the people who are not believers, Allah subhanahu wa ta'ala will still provide for them in the worldly life. Okay. And then he said that I will force them to the punishment of the fire, wa bi'sal masir, and evil is the destination. Okay. So, and mention when Ibrahim alayhi salam said, my Lord, make this a secure city and provide its people with fruits, whoever of them believes in Allah and the last day. Allah said, and whoever disbelieves, I will grant him enjoyment for a little, then I will force him to the punishment of the fire, and wretched is the destination. और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना और उसके रहने वालों में से जो खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता कर, तो खुदा ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं इसको भी किसी कदर मुतमत्ते करूंगा, मगर फिर इसको अजाब दोज़ख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा और वो बुरी जगह है. Yes, so far so good. We can jump to the grammatical analysis. So we know that this word is when, and this wow is and when qala is what? Fi'l madi, said. Now is you see Ibrahimu coming after qala? Yeah. Is qala siga number 1? Yeah. Yes. So the file is Ibrahimu. Who said? Ibrahim said. If there was no Ibrahim here, the word Ibrahim or the name Ibrahim, then he would be he said. Qala, He he said. said. But since Ibrahim is mentioned in Rafa, so we know that this is the outside file. So this is the verb and this is the file. Now what did he say? Rabbi. What is Rabbi? Now think about Ya Rabbi. Do we say something like that? Ay mere Khuda, ay mere Lord, ay mere Allah? Yeah. Yeah. So there is a munada. Ya is harfe nida, right? Yeah. And who is he calling out to? Rabbi. Allah. My Lord. My Lord is mudaf ilayh? Yeah. Yes. So there is a the ya is hidden, but if you read it, it was actually Ya Rabbi. Okay, Ya Rabbi mean oh my Lord. So Rabbi is mudafun alayh, and there is a
harfe nida, which is ya, which is mahzuf here. You know what is the meaning of mahzuf? Mahzuf. Not Mahzuf mentioned. is not mentioned, right? Not mentioned. Very good. Okay. What he said, my Lord, ij'al. Now this one, what is the haraka on the ain? Fatha. Fatah. And this is hamzatul wasl. So if we don't connect rabbij'al, if there was if we don't connect it, then what will be the haraka on the hamzatul wasl? Kasra. Kas. Ij'al. Make it. Yes. Now, who is the file in ij'al? Is it fi'lul amr? Yeah. So Yes. anta is the file, right? Yeah. Who are they asking? Who is he making the dua to? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. So he is talking to him in second person. So it will be anta. That you make it. Who? My Lord, you make it. What? Hada. This. Is haza over here is maful bihi? Yeah. Demonstration pronoun. And baladan aminan. Is it sifa mausuf? Yeah. Yes. Right? A secure city. Yes. Yeah. So Yes. this is murakkabe tawsifi. Tawsifi. And then this verb has this file, and this long verbal sentence is becoming the maful bihi for qala. Allah. But inside this ij'al is also a verb. Anta is the file. Maful bihi, it has two maful bihis. Maful bihi 1 and maful bihi 2. You. Now, what do we know about haza? Demonstrative pronoun. Yes, but we know about hada that hada is mabni. Yeah. Okay, the singular hada is mabni. And what Yeah. is the meaning of mabni? Doesn't All three change. states Remain same. stays the same. Yes. Yeah. So over here, what is the status of hada? Mansub. Nasab. Mansub, nasab, Nasab, because it is the maful bihi. See, sometime we don't know, but we know by the virtue of what is the role of this word here. Yes. Yeah. If this was the file, what would have been the status? Same. No, Rafa. file is rafa. Yeah. Yeah. File is File is Rafa. Yes. rafa. Yes. It would be written the same, but it will be It yeah. will be written the same, but the status Yeah. will be considered rafa. Rafa. Yeah. Rafa. That's what I was trying to. Okay, so mashallah, this is we have looked at all these words. We know them. Do you know any of the words here? Balad is a city. Aminan is a secure. Yeah. Mm. And this is ja'ala. This fail is ja'ala. And the failul amr will be ij'al. Ijal. Yes. Okay. Yeah. All right. Yes. So the next one, and then he's continuing this dua is, and this is and. So first he said, make this a peaceful city. Yeah. Yeah. Warzuk, then he said, and provide. Is razaka, what is the meaning of razaka? Provision. No, Provision. razaka, he provided. Yeah. Yes. He provided. Yeah. Razaka Mhm. is he provided. He So that's provided. the madi. Yarzuku, he provides. Yes. Yeah. Failul amr will be warzuk. Warzuk. Right? Now the warzuk is because we are adding the wow in the beginning. But if imagine if the wow was not there, then how would you say it? Arzuk. Urzuk. 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 Because Mhm. the ain is dhamma. So the hamzatul wasl will be dhamma. 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 And provide. Now again, who's the file in provide? Anta. Anta. Who's he making dua to? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. When you're talking to Allah subhanahu wa ta'ala, are you talking in the second person? Yeah. Yes. Ahluhu, its people. People of who? The people of the city. Baladin. Yeah. So is it ahluhu mudafun ilayh? Yeah. Yes. Yes. Minas samarat. Is it jar majroor? Yeah. Yes. Is samarat is jama of samar, Yeah. and it Yes. is in the halat jar. Yes. Yes. Yeah. Because samarat is jama mukassar. Yeah. Is everything clear this far? Yes. Okay. So alhamdulillah, that's good. So, and provide its people with fruits. Now with fruits doesn't mean that only the fruits, meaning the provision, basically. That Yeah. provide the people of the city with the provision. Because when he's making this dua, what is at that time present in Makkah? When Hazrat Ibrahim alayhi salam was making that house, was there any other people around it?
No. No. Was there any vegetation? No. No. Was there any economy going on? Zero. No. This place was a desert. Yeah. Yes. So imagine what is he thinking? He, as a messenger, as a as a wise person, he's making dua for the future. He's Yeah. making dua for the people who will come and live here, right? Yes. Yeah. Now, and think about this, that any visionary mind will think about two things: prosperity and security, Yeah, exactly. Mhm. right? Because if Yeah. you have prosperity, no security, can you live there peacefully? No. 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 And if you have security and no prosperity, then how can you? I mean, They- these two things, they come hand in hand, right? Yeah. Yes. Now he himself is not going to live there. His kids or his Progeny. son Ismail alayhi salam is going to live there, right? So Yes. when he came there was not even a single drop of water, Yeah. Yeah. and he left his family just in the desert without any provision. He may have given them a little bit, and we know from the story that there was not even enough water for them to survive, and that's how when the Zamzam came out Mhm. of the sand, right? So he's Yeah. making the dua that make it is a secure place, because if you are in the middle of the desert, and we know that the history of Makkah, who were there? Bandits. There were people who used to, attack people who were traveling, and there was a Tribal lot of, fighters. yes, there were like pirates and all those things, or the Yes. desert pirates, or we call them bandits, right? Yeah. Yes. Right. So he asked for security and prosperity, right? But he then reduced or contained his dua for only people who believed. Man Mhm. amana. So man here is Who? isme mausula, yes? Yeah. Who? Okay, and if we have isme mausula, then we need a sila. Yeah. And Mhm. sila is usually a verbal sentence, yeah? Yeah. So when Yeah. you say amana Mhm. mean who Those believed? believe. Yeah. He who believed, right? Amana. Yeah. So huwa Mhm. is the file, Yeah. right? Minhum jar majroor, among them Mhm. or Among from them. them. Yeah. So from who? The people who are going to live there, right? Yeah. Mhm. Billahi jar majroor, in Allah. Wal yawmil akhir, and the last day, right? Is yawmil akhir sound like a murakkab tawsifi? Yeah. Mhm. Angel. Yes, a day which is the last day, which means the day of Qiyamah. Yeah. And these waw in between is the matuf, yes? Yeah. Yes. So he said, and then to whoever believed from them in Allah and the last day. Mhm. Yes. So Yeah. this amana up to this wal yawmil akhir is a big is a verbal sentence, Yeah. and that Mhm. verbal sentence is the sila for man. Man. Man is Mhm. whoever. Whoever. Yeah. Mhm. Those Okay. who. Yeah. So next one, then Allah subhanahu wa ta'ala now qala. Now over here he said, we could have also said qala Allahu. Yes. Yeah. Because if there was an outside file like we had earlier, qala Ibrahimu. Yeah. Mhm. Yeah. If Allah was mentioned, the name Allah was mentioned, then it would have been qala Allahu. Qala Allahu. Allah Yes. said. But it is understood, because if we read the whole the context of the whole conversation, we know that the conversation is happening between Ibrahim alayhi salam and Allah And subhanahu Allah. wa ta'ala, right? So Yeah. Allah said to him, وَمَنْ kafara, and whoever disbelieved. Is kafara also siga number 1? Yeah. Yes. Kafara. So then the file is huwa, Huwa. Yes. and this man is shartiya, Yeah. right? Because there is a Yeah. shart now. Yeah. The- Those who. Yeah. So for ummati'uhu, then I will grant him enjoyment qalilan, a little. Mhm. Is qalilan like nasab? Yeah. So ummati'uhu also is a fail, file, and maful. Yeah. Mhm. I will grant him. This who is him. Mhm. Yeah. And ummati'uhu, I will, right? Mhm. Mhm. Fa'altu, I I. did, yes. Yeah. So, and fa is the then. This is Then. the harfi ataf also. Then the file is ana. Yes, agree? Yeah. Yeah. Mhm. And qalilan, because it's in the status of nasab, it is the maful bihi for this internal verbal sentence right here. So there is a Mhm. shart, there is a harfi shart man,
The shart Mm. is kafara, the one who disbelieved. Disbeliefs. Mhm. And the jawab shart is, what am I going to do with them? I will also provide them a little. In other words, I'll Mhm. provide him in the world. Mhm. Worldly, whatever they need in the world, I will provide them. Yes? Mhm. Yes. Mhm. Yes. Yes. They will And have only dunya. yes, and this whole shart, the harf shart and jawab shart become the maful bihi for this qala, Mhm. Yeah. right? Because Allah subhanahu wa ta'ala said, I am going to do the following to the people who disbelieved. Yeah? Yeah. Yeah. Okay, so then let's look at the next one. Summa attarruhu, and then I will force him. Again, this is a verb, and this is him, is the who here. Ana is the file. Ila adabin nar. Adabin nar is mudaf, mudafun ilayh, Yeah. punishment of the fire. And ila is Mhm. harf jar, so Jar. this is jar majroor. And this becomes mutalik for this word, attarruhu. At-tarrufu. Mhm. Yes? Yeah. Yes. So that's that. And then we have the last word, wa bi'sal masir. And bi'sa is also a verb, and al-masir is the file. And it's an evil destination. Evil is the destination. Yeah? Let's Yeah. read some of the Urdu version. So is qala Ibrahim. So जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा, ए मेरे रब, क्या कहा? ए मेरे मेरे रब, रब. तू इस शहर को अमन वाला बना दे. बना दे. बना दे is ij'al. Yeah. Right? So we have looked at all of this, but look at this one. Rabbi असल में या रब्बी था. क्या था? या या रब्बी. रब्बी. या रब्बी. अब ये तो ये या जो है वो नाहनु है ना, यानी Yeah. अना जो है, ठीक, Yeah. मेरे खुदा, मेरे अल्लाह. तो या क्या है? हरफे निदा, और ये महजूफ है. तो ए रब्बी मुनादा. रब्बी में रब और मुदाफुन इलैह कैसे बना? इस या की वजह से कि रब मेरे, यानी मेरे रब. सो मुदाफुन इलैह. यस, Yeah. आर यू एबल टू सी दिस? Yeah. रब्बी इज मुदाफुन इलैह, Definitely. माय लॉर्ड. यस. वर्जुक, और तू उसके बाशिंदों को फलों से रिज्क दे. ठीक है ना? तो उर्जुक क्या है? फेले अम्र है. कहाँ से है? रजा का यरजुकू से. और ये जाला यजअलू, जालुन से क्या बना था? इजअल. इजअल क्या है? इजअल क्या बना था? फेल अम्र. Al-Amr. ये किसके लिए है? वाहिद मुजक्कर के लिए. ठीक है ना? वाहिद Mhm. मुज़क्कर हाज़िर. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद है ना, Yeah. Mhm. एंड अल्लाह को हम मुजक्कर मानते हैं. तो हम अल्लाह ताला को जब रेफरेंस करते हैं तो मुजक्कर की उसमें करते हैं, और अल्लाह ताला वाहिद है. अब अगर हमने ये सबको मोर देन दो लोगों को कहना होता तो हम क्या कहते हैं? इज अलू. Mhm. अगर Yeah. ये फेले अमर वाहिद. एक से ज्यादा इंसान को देते, दो को देते, तो हम कहते इज अला. Yes. राइट? और अगर दो से ज्यादा को कहते तो हम कहते इज अलू. Alu. Yes. राइट? सो कीप इन Yeah. माइंड कि ये इज Yes. अल वाहिद है. ठीक है ना? Yeah. अगर ये हम किसी फेमिनिन को कहते तो हम कहते इज अली. Mhm. ठीक है ना? Yeah. राइट. तो ये जरा दिमाग में रखें. और यहाँ पे भी वर्जुकी, अगर फेमिनिन को कहते तो वर्जुकी कहते. वर्जुका, दो, तुम दोनों प्रोवाइड करो. वर्जुकू, तुम सब प्रोवाइड करो. ठीक है ना? वर्जुक, तू प्रोवाइड कर, या तुम प्रोवाइड करो. जब अल्लाह के लिए हम कहेंगे तो आप प्रोवाइड करें. ठीक है ना? जी. ओके. सो समरात हमने पढ़ लिया. ये जमा है समरा की. अब ये समरा जो है, ये मेल है फीमेल है? फीमेल. Female. फीमेल. तो इसकी वजह से इसकी जो जमा बनी थी वो क्या थी? अस्समराती. असमराती. तो आई टेक इट बैक, इट इज नॉट जमा मुकस्सर, इट इज एक्चुअली जमा सालिम मुन्नस. ठीक है ना? Yes. अल Yes. मुस्लिमात, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती. So this is jar is fine, but this is not जमा मुकस्सर. Okay. आमना युमिनु किससे बनता है? बाबे इफ़ाल से. इफ़ाल से. या सो तो हम पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद
मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और उनमें से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उसको अता कर ये चीजें। ठीक है, तो अल्लाह ने आगे से क्या जवाब दिया? उसने फरमाया, हम्म, किसने फरमाया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और जो कुफर करे तो मैं इसको थोड़ा सा फायदा दूंगा, फिर इसको आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा। ठीक है, सो वी लुक्ड एट दिस, इट्स जाला यजअलु इजअल। उसका इस्मुल फाइल क्या बनेगा? जाइलुन। इस्मुल मफूल क्या बनेगा? मजऊलुन। और मस्दर उसका क्या है? जालुन। बाब कौन सा जालुन। है? बाब फतहा। ठीक है, फेलुल अम्र ये कमांड है, वाहिद के लिए, मुजक्कर के लिए और हाजिर के लिए। हाजिर क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड व्हाट इज पर्सन। मालूम? मालूम मीन एक्टिव नो वॉइस। एक्टिव। उसके बाद वर्जुक कहां से बना? बाब नसरा से। रज़का यरजुकु, उर्जुक। देखा यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो हमजतुल वस्ल है उसके ऊपर कौन सी हरकत है? दम्मा की। क्यों? दम। क्योंकि जो आइन कलिमा है उसकी हरकत को देख के यहाँ हरकत लगती है। अगर दम्मा होता है तो दम्मा लगता है, अगर फतहा या कसरा हो तो यहाँ हमेशा कसरा लगता है। कसरा लगता है। यस। इस्मुल फाइल जो होता है उसको राजिकुन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह हमारा राजिक है। ठीक है ना, तो राजिकुन इस्मुल फाइल। अब इस इस्मुल फाइल का मतलब हुआ कि जो फाइल है उसका नाम क्या है, इस इन अल्फाज की रोशनी में, इन रूट लेटर्स की और इस बाब की रोशनी में हम उसे कहेंगे राजिकुन। ठीक है ना, तो ये यस। बहुत जरूरी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड इस्मुल फाइल। ठीक है ना, ठीक है। तो जब हम यस। कहते हैं इबादत, तो इबादत की रेफरेंस में जब हम इस्मुल फाइल ढूंढेंगे तो वो बनेगा आबिद। ठीक है, यस। वो फाइलुन के पैटर्न पे बनता है, फाइलुन के पैटर्न पे बनता है। अच्छा, अगर हम सजदा के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो वो बनेगा साजिदुन। ठीक है ना, यस। अगर हम जोहद के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो वो बनेगा जाहिदुन। ठीक है ना, अगर हम यस। नसरा के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, मदद करने वाले, तो वो होगा नासिरुन। यस। ठीक है ना, तो इसी तरह फाइल के पैटर्न पे इस्मुल फाइल बनता है, और मफूल के पैटर्न पे बनता है इस्म मफूल। और ये बनता है मुजर्रद की उसमें, क्योंकि जो मजीद फी हैं उसमें दूसरा पैटर्न होता है, उसके यस। शुरू में मीम लग जाता है। इस्मुल फाइल यस। में भी मीम लगता है और इस्म मफूल में भी मीम लगता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि इस्म फाइल में आइन कलमा पे जेर होती है और इस्म मफूल में आइन कलमा के ऊपर जबर होती है। यस। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। मस्दर क्या होता है? रिज़्कुन। और उसका जो इस्मुल मुबालगा है, यानी बहुत ज्यादा देने वाला, वो होगा रज़्ज़ाकुन। सी, यस। जिसमें मुबालगा, मुबालगा मतलब एग्जैजरेशन जिसमें पाई जाए। ओनली प्रोवाइडर। या, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। अमना, सो ये बाप समिया से है, तो इससे बनेगा अमीना यामनु ईमान। ईमन, इधर ईमन, या ईमान। ईमन सही है। आमिनुन मामूनुन अमनन, सो अमीनुन, वी नो व्हाट द वर्ड अमीन इज, राइट। और बाबे फाल से भी बनता है ये। ठीक है, तो अब देखें इसमें बाबे फाल से इस्म फाइल क्या बना? मोमिनुन, और मफूल क्या बना? मोमनुन। यू सी, we looked at this, we just talked about that. या। Okay, what else? Samarat, we know what that means. This one, the is a bab tafil, or mim ta ain is the root letters. ये फेलुल मुदारे है, और ये वाहिद है, मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्रेजेंट। पर्सन। ठीक है ना, और वो हुआ कि मैं, अना। क्या होगा इसमें? अना, नाहनु नहीं है ये, अना है ये। ठीक है ना,
ओके, सो ये आल्सो बाब फतह से भी आता है, उसमें ये होता है, और ये बाब तफील से भी आता है। ठीक है, Mhm. लेट्स सी दिस वन। ये वाला ये बाब इफ्तियाल से है। ठीक है, तो इसमें लेटर कौन कौन से हैं? दौद, रा, रा। तो ये मुदाअफ है, और Mhm. मुदाअफ भी कौन सा वाला? आइन और लाम lam, कलिमे वाला, राइट, जिसमें हमने इदगाम करना होता है। यू सी, आप उसको शद्दा देख सकते हैं, राइट। yeah. यस।